Welcome from Dhankar, a place which seems to be God's architectural marvel. Good morning from Kaza. Today is my last day here and today is Saturday, so काफ़ी टाइम है. आज का प्लान है धनकर मॉनेस्ट्री और धनकर लेक के लिए ट्रेल करने का. It will take about 5 to 6 hours. They have said that this trek is pretty good. I haven't seen it as yet. फोटोज़ भी ज़्यादा कुछ दिखे नहीं, तो खुद ही जाके चेक करना पड़ेगा. आपका नाम क्या है सर? मेरा अंगी. और हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे ना. So for Dhankar we have to go back towards Tabo और रास्ते में डाइवर्जन आता है. So I'm going backwards. That's Mushtach जहाँ पर मैं रुका था स्टार्टिंग में. And that is Kaza Gate. तो वो टाबो के लिए रास्ता है, ये वाला टाबो का रास्ता. और ये अपना लालू. लालू क्या है? लालू में भी मोनेस्ट्री है सर. लालू में भी मोनेस्ट्री है. हाँ जी. These are the different formation जो कि माउंटेन्स के बने हुए हैं. बहुत सही लगते हैं ऑन द वे टू धनकर. तो वाइल धनकर मोनेस्ट्री पीछे है, बट आई एम गोइंग टूवर्ड्स धनकर ट्रेल फर्स्ट. उसके बाद में मोनेस्ट्री देखेंगे. अच्छा ये वाला रास्ता ना सर? ठीक है, मैं जाके आता हूँ. इट्स एन ईजी ट्रेल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यू विल फील टायर्ड. तो बेस्ट है बेबी स्टेप्स चलो, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है ब्रेक दो अपने आप को. सो आई हैव हर्ड फ्यू स्टोरीज अबाउट धनकर लेक. आई विल टेल यू एज आई रीच देयर. तब तक जर्नी एंजॉय करो. माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू द लोकल्स हेयर. जब आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ये वाला रास्ता लेना है लेक के लिए, ये वाला रास्ता लेना है, especially a solo traveler like me might get confused. That is where they provide the sign कि लेक का रास्ता यहाँ से है. चलो. Few must to do things is अपनी जैकेट कैरी करना, चाहे कितनी भी गर्मी लगे. यू मे नीड अ कैप अगर बहुत तेज़ धूप हो, पानी का बोतल, सन ग्लासेस, सन ब्लॉक, लिप गार्ड. सो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विच वॉज इन्फॉर्म टू मी बाय वन ऑफ द रेस्टोरेंट ऑनर. स्पीति में इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक अ शावर एवरी डे अगर आप यहाँ लॉन्ग रन के लिए ले रहे हो. द ओनली रीज़न इज़ जो भी यहाँ पानी आता है स्पीति रिवर में, वो आता है इन ग्लेशियर्स के थ्रू. ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, इवेंचुअली इट गॉट स्टोर्ड. अगर आप गर्म करके भी नहाओगे तब भी ग्लेशियर का पानी है, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन. थैंकफुली मैं स्पीति में सिर्फ 7 दिन रह रहा हूँ, तो मैं रोज़ नहा रहा हूँ, सिवाय एक दिन के जब टाबो से काजा आया था और 36 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. बैंड बज गया था मैन. So I just met few other trekkers and they have told me it's just 5 minutes trek more.
So I met my old friends here now. We met again. This is the fun of Spiti. वापस हम लोग मिलते रहते हैं. तुम्हारा कुछ पुराना है. बिल्कुल सर. So I met these fellows from Muzaffarnagar कुछ दिन पहले और वापस से मिला. कहाँ जा रहे हो आप यहाँ से? We are moving ahead to Kalpa, और उसके बाद? which is like I think almost 7 to 8 hours journey. Nice. And then we'll stay there, and after that, like we'll be heading to Shimla. We'll stay there for a night, and then we'll go back home. Yeah. Awesome man. Also we are staying. So here comes the Dhankar Lake. छोटा सा लेक है. I'm gonna have a complete round. ये लेक अराउंड 4140 मीटर के हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है. Now let me tell you about the interesting fact about this place. There is a story that when Lord Shiva was in the quest for Lord Vishnu, वो यहाँ पर आए थे and he stayed here for some time. और जब वो यहाँ रुके हुए थे तो उनका जो वाहन है नंदी, उसको प्यास लगी थी and he came here and he had some water from this lake. With that thing Lord Shiva was pretty happy and he blessed this lake कि यहाँ पर हमेशा पानी रहेगा even if it is at this high altitude, and that is how it is being known as very pious lake. And here comes the stupa and two very cute dogs right next to the Dhankar Lake. I think I'll be walking back from now. It's been about half an hour, 1 hour. I have lost the track on time. This place looks so peaceful. But Dhankar Monastery करनी है, Dhankar village देखना है. How can we skip that also? It indeed was an incredible trek. I might be sounding like a broken record, but every time I trek, I say this. No matter आप कितना भी थक जाते हो, you feel so cursed about trekking so much. Why are you doing it to yourself and blah blah blah. But once you reach there, you realize कि यार जगह इतनी अच्छी है, पूरा ROI मिल गया. Being a finance guy, you can expect such sort of terms from me, right? I'm trekking back to Dhankar now. So when I say that God is the architect, this is what I talk about. That's the new monastery. That is where the old monastery and the palace is. It's been said कि गर्मियों में यहाँ का प्रिंस स्वीतिका यहाँ आता था. I don't understand why people are still not aware about it. This is my India, guys. ये है मेरा India. So done with the trekking. That is where I started my trail, and now I'm going towards Dhankar. So the first thing which I'm seeing in Dhankar is this monastery. This one is the new monastery. It's still under construction. I was told that यहाँ पर old monastery भी है, and I'm pretty much biased. Old is gold when it comes to monastery. I'm very intrigued to see the old monastery. I just came here to have a view, and what I'm seeing it, I can't express in words. व्यू को निहारने के बाद में आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द ओल्ड मोनेस्ट्री नाउ. दो इट्स सैटरडे, मेरी छुट्टी है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बट दिस ट्रिप वाज ऑल अबाउट वर्क फ्रॉम स्पीति.
सो यहाँ पर काफ़ी होम स्टे मिल जाएंगे आपको, डॉम्स भी मिल जाएंगे. I just run the internet speed test and I was again surprised. Download speed more than 40 Mbps and upload is more than 20 Mbps. So as long as you are getting electricity, you can definitely work from here. And I would say you should, क्योंकि view इतना अच्छा है. So that's the old monastery का entrance at Dhankar. उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम. Deep. That is where the new monastery जो हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले. The parking right outside the old monastery, you will see the passage which will take you to the top to get the 360-degree view of Dhankar. Right now I am standing on the top of the Dhankar. I think this is the top. इसके ऊपर कुछ नहीं है. And the 360-degree view, wherever I see, it has altogether different landscape, different formation. It indeed is beautiful, and I cannot express in words how much. Those are the mud houses, the rock formation, new monastery, old monastery, Spiti side. I would say Dhankar is one of those places जिसकी beauty camera capture नहीं कर सकते. You have to come here, you have to explore it to see it on your own. So just done with Dhankar visit and I loved this place. I would highly recommend this one. Now I'm heading back to Kaza. कल के दो ऑप्शन है, या तो एक नई डेस्टिनेशन देखने वाला हूँ और I'll head back to Manali. I don't know right now. कल का कल ही पता चलेगा. Until then, you ensure that you like, share, subscribe and hit the bell icon for notifications. And I'll show you some more places like this. Next episode will be the last episode of current Work from Spiti and Himachal series with a great lake which is a must visit place during your Spiti Valley circuit. So do not forget to subscribe, comment and share. And until then, stay safe, stay healthy. फिर मिलेंगे.